पावर ऑफ एएम सिग्नल, इस टॉपिक को हम एनालाइज करना चाहेंगे आज कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर पावर की कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कितने होते हैं. सो लेट अस बिगिन विथ द सेम एक्सप्रेशन which we have seen earlier. The expression of a modulated standard AM signal is S of t as AC1 plus k AMT cos of 2 pi FCT. So this is the general expression of a modulated waveform. Consider we have a single tone message signal. So a single tone message signal must be looking like MT equals to AM cos 2 pi FMT. It has a single frequency component and that frequency component exists at the frequency of FM. So we have a single tone message signal here, which is nothing but AM cos 2 pi FMT. Now we substitute this expression of the single tone message signal in the expression of the modulated waveform. So therefore S of t will be AC1 plus Ka. In place of mt, I'll write AM cos of 2 pi FMT. Cos of 2 pi FCT is now the expression of the modulated waveform. Now we distribute this and open the braces. We will get the expression of the modulated waveform as AC cos 2 pi FCT. When we multiply AC cos 2 pi FCT with 1, we'll get this. When we multiply AC cos 2 pi FCT with KAM cos of 2 pi FMT, we'll get mu AC cos of 2 pi FCT multiplying with cos of 2 pi FMT, where mu is Ka into AM. Cos A into cos B एक्सप्रेशन को आपको cos A plus cos B के फॉर्मेट में ब्रेक करना पड़ेगा. सो विल टेक मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड बाय 2. सो 2 cos A cos B given as cos of A plus B plus cos of A minus B. Hence the expression will be AC cos 2 pi FCT will be rewritten as it is mu AC by 2, और 2 cos A cos B को आप ब्रेक करेंगे cos of A plus B, which is nothing but cos of 2 pi FC plus FMT plus cos of A minus B. So you will write it like cos of 2 pi FC minus FMT. So we have these three components: AC cos 2 pi FCT plus mu AC by 2 cos of 2 pi FC plus FMT plus mu AC by 2 cos of 2 pi FC minus FMT. So we have three different components in this modulated waveform. और ये तीन components क्या क्या हैं? One is the carrier signal, second is the upper sideband, and the third is the lower sideband. So these three components we may observe in the modulated waveform expression. We have a carrier which is AC cos 2 pi FCT. We have upper sideband which is nothing but mu AC by 2 cos of 2 pi FC plus FMT, and we have a lower sideband which is mu AC by 2 cos of 2 pi FC minus FMT. Now since we have these three components in the modulated waveform, जो total power होगा वो total power क्या होगा? इन तीनों कंपोनेंट्स के अंदर जो जो पावर आएगा उन तीनों कंपोनेंट्स के पावर को मैं सम कर दूंगा एंड देन आई विल गेट द टोटल पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म. टोटल पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन एज, किस तरीके से लिखेंगे आप इसको? PT, that means total power, equals PC, that means carrier power, plus P of USB, that means upper sideband power, plus P of LSB, that means lower sideband power.
So we have three components: carrier, upper sideband, lower sideband. Total power will be nothing but sum of the individual powers of the different components. So the total power will be carrier power plus upper sideband power plus lower sideband power. The expression of the carrier signal is AC cos 2 pi f ct. तो इसके अंदर का जो पावर आएगा, लिमिट t अप्रोचिंग इंफिनिटी 1 by 2t integration of minus capital T to plus t modulus of x of t whole square of dt. This is how we can easily calculate the power of a power signal. Carrier power is AC square by 2. So PC is nothing but AC square by divided by 2. The power in the upper sideband must be upper sideband का जो magnitude है, which is what, mu AC by 2. Make it square and divide by 2. Simple. So power in the upper sideband P of USB is nothing but amplitude square, which is mu AC by 2 whole square divided by 2. And this value will be equals to mu square AC square by 8. Mu square AC square divided by 8. Right? Mu square AC square divided by 8. So this must be the power components in the upper sideband. Since the magnitude of the upper sideband and the lower sideband is same, hence the power components in the upper sideband as well as in the lower sideband will be same. So the power in the lower sideband of the signal will be same as mu square AC square by 8. We'll add them all to find the total power of the modulated signal. So the total power is nothing but PD equals to AC square by 2, which is the carrier power, mu square AC square by 8, which is the upper sideband power, and mu square AC square by 8, which is the lower sideband power. We took AC square by 2 as common, hence the expression will be like AC square by 2 1 plus mu square by 2, and AC square by 2 is nothing but PC, hence we can rewrite this expression as PT equals PC 1 plus mu square by 2. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसको आप आने वाले टाइम में मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करने वाले हैं. सो PT is nothing but PC 1 plus mu square by 2. This is the power component of the modulated waveform when the signal is modulated with the help of a standard AM modulator. PT is nothing but the power of the carrier after modulation. What is PC? The power of the carrier before modulation. So this is after modulation, and PC is nothing but the power of carrier before modulation. That the expression of PC is nothing but AC square by 2. And the sideband power का मतलब है लोअर साइडबैंड पावर प्लस अपर साइडबैंड पावर. जब आप इसको सम करेंगे you will get, see, open this expression, PT equals to PC1 plus mu square by 2. Open this. So you'll get PT equals to PC plus PC mu square by 2. So PC is the carrier power, while PC mu square by 2 is the sideband power, which is the summation of the lower sideband as well as upper sideband power. So the sideband power will be written as PC mu square by 2. See, we have a note. Note number 1 कहता है carrier power is independent of the modulation index. Carrier power mu पर डिपेंड नहीं करता है. एक्सप्रेशन से साफ जाहिर भी है. The value of PC is nothing but AC square by 2. Now, since in this expression we cannot find mu anywhere, hence we can say the carrier power is independent of the
मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू पर डिपेंड नहीं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कितनी भी वैल्यू रहे, कैरियर की जो पावर होती है बिफोर द मॉड्यूलेशन विल बी इनवेरिएंट irrespective of the value of the modulation index mu. Okay. Second point says the sideband power depends on the modulation index mu, and as the modulation index increases, sideband power also increases. It says sideband power की वैल्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि फॉर्मूले में आप लोग देख सकते हैं, PSB इज नथिंग बट PC म्यू स्क्वायर ओवर 2। साइडबैंड पावर के फॉर्मूले में आप म्यू देख सकते हैं, हेंस वी कैन से द साइडबैंड पावर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड the relation is directly proportional. So as we increase the value of mu, the sideband power is also increases. Hence the total power of the AM signal increases. तो जैसे जैसे साइडबैंड पावर की वैल्यू बढ़ती जाती है, टोटल पावर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। एक पावर का फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, कैरियर पावर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, AC cos 2 pi FCT को कैलकुलेट करने का ये तरीका है। Now, need to observe the different cases. Let us begin with the case number 1. It says if the modulation index is 0, अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, in that case the value of the power in the sidebands must also be equals to 0. Why? Because the formula says PSB equals to PC mu square by 2. So when you replace the value of mu as 0, you will get PSB equals to 0. So the sideband power will be 0. इसका मतलब sidebands के अंदर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब सारी की सारी पावर सिर्फ कैरियर के अंदर है। इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है, हेंस वी हैव नो मॉड्यूलेशन। नाउ सिंस नो मॉड्यूलेशन तो टोटल पावर की वैल्यू क्या होगी, टोटल पावर मस्ट बी इक्वल्स टू द कैरियर पावर ओनली, बिकॉज साइडबैंड पावर इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आप इस एक्सप्रेशन को, मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और वो एक्सप्रेशन कैसा होगा, this will be nothing but AC cos of 2 pi FCT, because there is no sidebands, only the carrier which will be traveling from the source to destination. अब कैरियर को ही आपने सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करवाया है। इस केस में कोई भी मैसेज ट्रेवल ही नहीं किया। जब कोई भी मैसेज ट्रेवल नहीं किया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, राइट। सो देयर इज नो मॉड्यूलेशन, मैसेज का कोई भी कंटेंट कैरियर के ऊपर ओवरलैप नहीं किया गया है, हेंस दिस इज द केस ऑफ नो मॉड्यूलेशन। वी हैव नो मॉड्यूलेशन हियर बिकॉज द साइडबैंड पावर इज 0. द केस नंबर 2 which says if the modulation index is 1 maximum value, this is the 100% modulation or total modulation, because we generally do not prefer the over modulation case. So the maximum value a modulation index can achieve is 1. So this is the 100% modulation or a total modulation. Sideband power is PC mu square by 2. Now since mu is equals to 1, mu square by 2 will be equals to 0.5. So sideband power will be equals to 0.5 of PC or PC by 2. So you'll get the sideband power as PC over 2 form. Total power is nothing but carrier power plus sideband power. So this is PC plus 0.5 PC. Hence the total power will be 1.5 times of carrier power. Now, as the modulation index increases from 0 to 1, the total AM power is increased by 50%. So as we increase the modulation index from 0 to 1, we are increasing the total power
by 50%. Now, let us take case number 2 once again, which says when the modulation index is 1, when mu is equals to 1, the value of total power PT is equals to 1.5 PC. If PT is equals to 1.5 times of PC, then the value of PC must be equals to 2 by 3 times of PT. That means PC is equals to 0.6666 times of PT. This is the carrier power represented in terms of total power. That means PC is equals to 66.67 percentage of the total power. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 100% मॉड्यूलेशन अचीव करते हैं, जब आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1 उसको कंसीडर करते हैं, उस समय पर कैरियर के अंदर जो पावर होती है वो पावर टोटल पावर की 66.67 परसेंटेज होती है. तो बाकी की जो पावर है विच इज व्हाट 33.33% ऑफ पावर, वो पावर किसके अंदर होगी? वो पावर साइड बैंड की पावर होगी. पीटी इज नथिंग बट पीसी प्लस पीएसबी, दैट मींस कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर. नाउ सिंस पीटी इज नथिंग बट 2 by 3 टाइम्स ऑफ पीटी, पीसी की वैल्यू है 0.66 टाइम्स ऑफ पीटी प्लस साइड बैंड पावर. सो द साइड बैंड पावर इज नथिंग बट 1 by 3 times of PT, or side band power is equals to 33.33% of the total power. तो ये ऑब्जर्वेशन आपने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाला कि जब हम जीरो मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है, तो सारी की सारी पावर कैरियर पावर के अंदर ही होती है. पर जब हम मैक्सिमम मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू को 1 कर देते हैं, उस समय भी हमारी काफी ज्यादा पावर कैरियर पावर के अंदर होती है. हमारी 66.67 परसेंटेज ऑफ टोटल पावर कैरियर पावर के अंदर होती है, जबकि सिर्फ 33.33 परसेंटेज जो होता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द साइड बैंड पावर. सो वी कैन कंक्लूड 2 points. Point number 1, if the modulation index is 0, the carrier power is nothing but the 100% of the total power, and the sideband power is 0% of the total power. तो सारी की सारी पावर जो टोटल पावर है वो किसके पास होती है? कैरियर के पास होती है. कैरियर पावर contributes 100% in the total power. But when the modulation index is equals to 1, carrier power contributes 66.67 percentage in the total power, whereas the sideband power, which contains the message, contributes only 33.33 percentage of the total power. You got it? So जो मैसेज है वो मैसेज अभी भी टोटल पावर में सिर्फ 33.34 परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पावर कंपोनेंट्स. हमारी मैक्सिमम पावर अभी भी सिर्फ कैरियर को ट्रांसफर करने में वेस्ट हो रही है. एंड दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्टैंडर्ड AM सिग्नल. In the efficient power distribution case, that is when we are achieving the 100% modulation index is 1, and this is the case which is called as the efficient power distribution case. Even in this case, still the 66.67 percentage of the total power is wasted. ये power waste हो रही है in the form of transmission of additional carrier which has no message in it. And this is the biggest drawback of the standard AM signal. AM signal का जो major drawback है
वो यही है कि आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स, आप इफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन केस कंसिडर कीजिए जहां पर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 1 लेके चलते हैं। इवन इन दैट केस आपकी बहुत सारी पावर सिर्फ कैरियर को ट्रांसफर करने में वेस्ट हो जाती है। 66.67% विच इज नथिंग बट 2/3 टाइम्स ऑफ द टोटल पावर, और वो वेस्ट हो रही है जिस उस मैसेज उस कैरियर को ट्रांसफर करने में जिसके अंदर कोई मैसेज ही नहीं है, विच इज वेस्ट। सो द स्टैंडर्ड एएम हैज अ ड्रॉबैक as it is not the efficient power distribution method, जिसमें हमारी पावर बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है to transmit the carrier signal from the source to destination. Modulation efficiency specifies the share, it specifies the share of the sideband power in the total power. Total power में साइडबैंड पावर का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको हम मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इज अ डिफरेंट टर्म देन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इज कंप्लीटली डिफरेंट टर्म एज कंपेयर टू द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, मॉड्यूलेशन इंडेक्स may be equals to the 100% when you are taking the value of mu as equals to 1. Even then, the modulation efficiency is not equals to 100%. It will be 33.33% only. Okay, so modulation efficiency specifies the share of the sideband power in the total power. Sideband power total power के अंदर कितना contribute कर रही है उसको represent करने के लिए एक term हम लोगों ने introduce किया है, and that term is nothing but the modulation efficiency. Efficiency is equals to 0.1. It means it signifies the sideband power is how much? 10% in the total power. Total power में sideband power का जो contribution है वो सिर्फ 10% ही है. Eta equals to 0.1, that means 10%. If eta equals to 1, that means 100%. So modulation efficiency is 0.1 says total power में sideband power का जो contribution है वो है 10%. If eta equals to 0.3, what does it mean? It means total power में sideband power का contribution कितना होगा? 30%. 0.3 means 30%. Sideband power is 30% in the total power. अब मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे आया तो उसको देखने के लिए you can observe this mathematically. Modulation efficiency is nothing but the sideband power over the total power. Sideband power divided by total power, and when we divide it we'll get the modulation efficiency. Okay, now PT is what? PC 1 plus mu square by 2. And what is the value of PSB, sideband power? Is nothing but PC mu square by 2. So I'll substitute these two values in this formula. Sideband power is PC mu square by 2, whereas total power PT is equals to PC 1 plus mu square by 2. थोड़ी देर पहले हमने इस फॉर्मूले को देखा है. Now I can rewrite this expression by adjusting the values of PC in the numerator and denominator. The value of efficiency eta will be equals to mu square divided by 2 plus mu square. So eta is nothing but mu square divided by 2 plus mu square. Now we have three different cases in this modulation efficiency. We'll consider a case when modulation index mu is equals to 0. We'll consider a case when modulation index is equals to 1 by square root 2. And third case when modulation index is maximum value, which is equals to 1. So let us begin with our first case. If the modulation index is equals to 0, ये formula आप लोग दिमाग में रख लीजिए, mu square divided by 2 plus mu square. Now when the modulation index is 0, if the modulation index mu is 0, mu square divided by 2 plus mu square, क्या value आएगी? 0. Hence the efficiency will be 0. It says
व्हाट डज इट से? मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी इज जीरो, इसका मतलब साइड बैंड पावर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल पावर के अंदर? 0%। कब कंट्रीब्यूट कर रहा है 0%? व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट? व्हाट डज इट signifies is? It says sideband power is 0% of the total power. It is contributing 0% in the total power, whereas the carrier power is contributing the 100% of the total power. Total power के अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ कैरियर ही है, मैसेज नहीं है. Case number 2, when modulation index is equals to 0.7071 by square root of 2. So when you substitute the value 1 by square root of 2 in mu square divided by 2 plus mu square, you will get the value 1 by 5. Efficiency is nothing but 0.2. 0.2 efficiency का मतलब है sideband power is contributing 20% in the total power and the carrier power is contributing 80% in the total power. So it says sideband power is contributing 20% of the total power, whereas carrier power is 80% of the total power. Last case, when modulation index is equals to 1, efficiency will be mu square divided by 2 plus mu square, 1 divided by 2 plus 1, hence 1 by 3, hence 0.33. 0.33 का मतलब है 33%. That means sideband power contributing 33% in the total power, whereas carrier power contributing 66.7% in the total power. Sideband power is 33.33% of the total power, whereas carrier power is 66.7% of the total power. छोटा सा relation है between PC and PT. Let us see this relationship between carrier power and total power with respect to the modulation index, and we have seen this earlier as well. PC divided by PT is PC divided by PT को आप लिख सकते हैं PC1 plus mu square by 2, so it is nothing but 2 divided by 2 plus mu square. Modulation efficiency is different. Modulation efficiency is mu square divided by 2 plus mu square, whereas PC over PT is 2 divided by 2 plus mu square. Does not have the basic significance, बस ये यही बताता है कि total power में carrier power कितना contribute करता है. So if modulation index is 0, PC over PT is 1, that means PC is contributing 100% in the total power. Power and sideband power is 0. And when mu equals to 1, PC is 2 by 3 times of PT. That means carrier power is 66.67% of the total power, whereas sideband power is 33.33% of the total power. So this is a general relation between the PC and PT. Let's discuss the current relations in amplitude modulation. PT equals to PC 1 plus mu square by 2 में हम P की जगह वैल्यू रिप्लेस करने वाले हैं I square R. R is nothing but the radiation resistance of the antenna. तो उस R को आप कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं. PT का मतलब है जो पावर एंटीना से रेडिएट हो रही है उस वक्त उस एंटीना के अंदर जो करंट है, दैट करंट इज नथिंग बट I. सो इन केस ऑफ PT आई विल राइट I square T into R equals to, in case of PC I write I square C into R. 1 plus mu square by 2 will remain as it is. So radiation resistance दोनों तरफ है, you can adjust it from the left and the right hand side. I square T equals to I square C 1 plus mu square by 2. Take the square root on both the sides, you will get IT equals IC 1 plus mu square by 2. This is the current relation, the total current and carrier current before the modulation and after the modulation. Okay, what is IT? IT is nothing but the total current, total antenna current, which is the current of the antenna after the modulation. What is IC? Carrier current component. That means the antenna current before the modulation. We have a voltage relation is in amplitude modulation.
Pt is Pc1 plus mu square by 2. In place of P, I'll add V square over R. So it is V square T over R equals V square C over R 1 plus mu square by 2. Radiation resistance R will be adjusted from the left and the right hand side. At the same time, Vt can be written as Vc square root of 1 plus mu square by 2. So this is the antenna voltage before the modulation, and Vc is the antenna voltage after modulation.